Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to read a poem, The Clothes Line, from our book New Oxford Modern English Book for Class 6. This poem is written by Charlotte Druitt Cole. She was born on 13 January 1878. Her work appeared in a number of poetry anthologies for children in 1920s and 1930s. Some of her work includes The Clothes Line, Pudding Charms, Sun and Moon, The Green Lady, and many other poems for children. So, this is a poem, The Clothes Line, from your book. What is a clothes line? A clothes line is a device for hanging clothes on for the purpose of drying them. It is any type of cord, rope, or twine that has been stretched between 2 points, outdoor or indoor, above the level of ground. You can see here. So the poem is written by Charlotte Druitt Cole, and it tells us cloths line is a device that has jolly and funky scene in some windy day, and this poem tells us about cloths line and the cloths and what all the poetess imagines the cloths must be thinking. The poem takes place on a windy March day when the sun is shining brightly. The cloths are put on the cloths line in the backyard of the poetess' house. The poetess uses her creativity and imagination to describe the cloths hanging on a cloths line. So we can say that the poem is so beautiful about cloths. The poem is beautified with imagery and similes. These are the figures of speech that are used to create and enhance the aesthetic sense of the piece of writing, whether it is poem or prose. So these are figures of speech, imagery and similes. Imagery is a literary device to bring out the aesthetic sense to the piece of writing, and it create a word picture for the reader by the details of sight, sound, taste, touch, smell, or movement to create a picture in the mind of the reader. And the other figure of speech is simile. What is simile actually? It is a comparison between two things using the words as or like, and the comparison is between two things about the same quality, like the cloth is as white as snow, he is as brave as lion, and he jumped like a monkey. So these are the examples of similes. Here in this poem, we can see a number of imagery and simile. The static sense of the poem is superb. So let's start the reading of the poem, The Clothes Line. First of all, words to know: caper, to frolic, play, dance. Hither, thither, here, there. Prance means to dance or rear up like a horse. Restive means restless, impatient, unquiet. So let's start the reading of the poem, and let me be bilingual for the better understanding of the poem. So I would like to explain the poem with Urdu translation. Let's start the reading of the poem. Hand in hand they dance in a row, hither and thither and to and fro. हाथों में हाथ डाले एक कतार में नाचते हैं. Hither and thither and to and fro, इधर उधर आगे पीछे. Students, जब
कपड़े वॉश करने के बाद क्लॉथ्स लाइन पे फैलाए जाते हैं और हवा बहुत तेज़ चल रही हो तो आप देख सकते हैं कि कपड़े बड़े अजीब अंदाज में एक से अंदाज में रक्स करते हैं। ऐसा लगता है कि वो नाच रहे हैं, खुशी से उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। दाएं-बाएं जिस तरफ हवा का रुख होता है, उस तरफ कपड़े मूव करते हैं। कभी दाएं, बाएं, आगे और पीछे। कोई उनकी डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि उनको जो हवा मूव कर रही होती है बेसिकली उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। विंडी डे है, मार्च है, बाहर के मौसम में वैसे भी हवाएं बहुत अच्छी चलती हैं, बहुत तेज़ हवाएं होती हैं। तो वो कहती है कि क्लॉथ्स लाइन पे इस तरह से आगे पीछे इधर उधर कपड़े नाचते हुए लग रहे थे। फ्लिप फ्लैप फ्लॉप। फ्लिप का मतलब होता है उलट पलट के देखना। फ्लैप का मतलब होता है फड़फड़ाना। एंड फ्लॉप का मतलब होता है धप से बैठ जाना। तो ये सारे साउंड्स हैं, फड़फड़ाने के साउंड्स हैं, जिसमें कपड़े बहुत तेज़ी से हरकत करते हैं और फड़-फड़ की आवाज़ आती है। एंड अवे द गो, और दूर चले जाते हैं फड़फड़ाते हुए, दूर चले जाते हैं। फ्लटरिंग क्रीचर्स, फड़फड़ाते हुए जानदार। वो इस तरह से मूव करते हुए लग रहे हैं जैसे वो जानदार चीज़ें हैं। एज वाइट एज स्नो, इतने सफ़ेद जैसे कि बर्फ। एज वाइट एज स्नो इट्स एग्जाम्पल ऑफ simile. Like restive horses, they caper in trance. Like restive horses, they caper in trance. Like fairy tale witches, they wildly dance. बेचैन घोड़ों की तरह, रेस्टिव रेस्टलेस, बेचैन घोड़ों की तरह वो उछलते हैं और इठलाते हैं, इठला के चलते हैं। और किस तरह से इठला रहे? लाइक फेरी टेल विचेस दे वाइडली डांस, और घोड़ों की तरह वो नाचते हैं, उछलते हैं। एक और एग्जाम्पल उसने दी है, सिमिली यूज़ की है कि परियों की कहानियों की जादूगरनियों की तरह वो ज़ोरों शोर से नाचे हैं। कौन? कपड़े। हवा इतनी तेज़ है कि वो कपड़े फड़फड़ाते हुए ऐसे लगता है जैसे कोई बेचैन घोड़े सफ़र कर रहे हो, नाच रहे हो, उछल रहे हो, कहीं जा रहे हो। और एक और एग्जाम्पल उसने दी है कि जैसे परियों की कहानियों में चुड़ैलें जो होती हैं, उनके भी बड़े बड़े लिबास होते हैं, क्लॉक्स पहने होते हैं उन्होंने, और वो इस तरह से दीवानावार रक्स करती हैं जादू करते हुए। तो वो कपड़े ऐसे ही रक्स करते हुए महसूस हो रहे हैं। राउंडेड इन फ्रंट एंड हॉलो बिहाइंड, सामने से गोल मगर पीछे से खाली, गार की तरह खाली, बाउल की तरह खाली। They shiver and skip in the merry March wind. वो कांपते हैं और उछलते कूदते हैं, फुदकते हैं। स्किप, जिस तरह से रस्सी पर लांघते हैं, इस तरह से। किस मौसम में? मौसम कैसा है? मार्च की पुरमसरत हवा में, खुशगवार हवा में। ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो कपड़ों के बारे में है। उसको कपड़े इस तरह से फंकी और जॉली अंदाज में लहराते फड़फड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं कि उसकी जो सिमिलीज हैं उसकी एग्जांपल्स ही ख़त्म नहीं हो रही हैं। अगर देखा जाए तो वो बहुत हैप्पी फील कर रही है उसको देखते हुए। अब यहाँ पे ज़िक्र आता है एक ऐसी पीस ऑफ क्लॉथ का जिसको वो आगे जाके एक्सप्लेन करती है। अभी एक तजस्सुस रहता है। लाइक द पोएम सेज, One I saw dancing excitedly. एक को मैंने देखा पुरजोश तरीके से नाचते हुए। Struggling so wildly, दीवानावार जिद्दोजहद करते हुए। Till she was free, यहाँ तक कि वो आज़ाद हो गई। Then फिर living pegs, pegs कहते हैं वो क्लॉथ क्लिप जो चुटकी हम लगाते हैं क्लॉथ्स लाइन के ऊपर कपड़े को काबू करने के लिए कि वो उड़ ना जाए, उसको पैग भी बोलते हैं। सो लिविंग पैग्स
उसने उस क्लॉथ क्लिप को, चुटकी को छोड़ दिया। एंड क्लॉथ्स लाइन बिहाइंड हर, दो चीज़ें उसने अपने पीछे छोड़ दी, कपड़ों की तार को भी और क्लॉथ क्लिप को भी। शी फ्लू लाइक अ बर्ड, वो उड़ी एक परिंदे की तरह। एंड नो वन कैन फाइंड हर, और कोई भी उसको तलाश नहीं कर सकता। आई सॉ हर ग्लीम, मैंने उसको चमकते हुए देखा, लाइक अ सेल, बादबान जैसे, इन द सन, धूप में। धूप में जैसे कश्तियों के सफ़ेद चमकदार उजले बादबान जिस तरह से चमकते हुए हैं, वैसे ही उसने, शायरा ने, उस पीस ऑफ क्लॉथ को चमकते हुए देखा। फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लोपिंग फॉर फन, जो मज़े के लिए, एंजॉय करते हुए, जोशो खरोश से आगे बढ़ रहे थे, उलट पलट होते, फड़फड़ाते और धप से गिरते। Nobody knows where she can be. Nobody knows, कोई भी नहीं जानता, where she now can be, कि अब वो कहाँ हो सकती है। क्या था वो? Hid in a ditch, अभी भी वो नहीं बता रही। वो कहती है कि वो कहाँ गई, किसी गड्ढे में, नाले में छुप गई, और drowned in the sea, या समंदर में डूब गई। She was my handkerchief, वो मेरी, वो क्या था? वो मेरा रुमाल थी। She was my handkerchief, not long. I saw her gleam like a sail in the sun. मैंने उसे देखा धूप में बादबान की तरह, जैसे कश्तियों के सफ़ेद बादबान होते हैं, नीले समंदर और चमकती हुई धूप में वो भी चमकते हुए महसूस होते हैं। तो कहती है कि मैंने उसे देखा धूप में बादबान की तरह चमकते हुए, फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लॉपिंग फॉर फन, मज़े के लिए, बहुत मज़े से, या इस चीज़ को एंजॉय करते हुए, उलट पलट होते, फड़फड़ाते और धप से गिरते। Nobody knows where she now can be, कोई नहीं जानता कि अब वो कहाँ हो सकती है। Hid in a ditch, वो किसी गड्ढे में, किसी नाले में गिर गई। Or drowned in the sea, और या फिर समंदर में डूब गई। Now she reveals what was that piece of clothing actually. She was my handkerchief not long ago. ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा कि वो मेरा रुमाल थी, यानी वो बहुत देर से भी वो मेरे पास रुमाल मौजूद नहीं था, कुछ अरसा पहले ही वो मेरे पास आया था, और वो रुमाल मेरे पास बहुत अरसे से नहीं था। सो ज़ाहिरी बात है, पीस ऑफ क्लॉथ, कोई भी चीज़ अगर न्यू हो तो वो बहुत अजीज़ होती है। वैसे तो चीज़ों के साथ अटैचमेंट पे डिपेंड करता है, वो पुरानी है तो भी, अगर नहीं है तो भी, आपके साथ उसकी कितनी ज़्यादा कोलैबोरेशन है। Nobody knows where she now can be, कोई नहीं जानता कि अब वो कहाँ हो सकती है। Hid in a ditch, किसी नाले में छुपी हुई। Or drowned in the sea, या समंदर में डूबी हुई, कहाँ पे है नहीं पता, किसी गड्ढे में गिर गई या किसी समंदर में, वो चीज़ कहाँ गई उसको नहीं पता चला। She was my handkerchief not long ago. Now she reveals what was that one that left the pegs and clothes line, and uh, she was not aware where was she now. So now she tells us that piece of cloth was actually her handkerchief. Not long ago, ज़्यादा अरसे की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात नहीं है कि वो मेरा रुमाल थी। But she will never come back to my pocket, I know. मगर मैं जानती हूँ कि मेरी जेब में वो वापस कभी नहीं आएगी। जो एक बार चला जाता है वो दोबारा नहीं आता। So this is all about your poem and explanation in Urdu. Let me summarize the poem in simple words.
The poem is a visual piece of poetry. The poetess describes the cloths on the cloths line, swaying and fluttering in the merry marsh wind. It describes the behavior of the cloths on a rope in a windy day. The poetess compares the movements of cloths to capering and prancing horses and fairy tale witches widely dance and walk with high springy steps. She stated about her handkerchief too in this poem. Among all the cloths, her handkerchief made it set free and flew like a bird. It sailed in the sun. The handkerchief had flown away and lost its identity. The beauty of the poem is hidden in its interpretation. The attitude of the set free handkerchief was compared to an individual who wants unbound freedom. This is actually the theme of the poem. The hidden meaning of the poem is that the behavior of the handkerchief was compared to an individual who wants unbound freedom. The strength of life lies in unity. If we are united, we will never lose our identity and self respect like a set free handkerchief. The poetess begins the poem with a happy note of cloths dancing on the cloths line, but she ends it with a sad note of her handkerchief that flew away and never come back to her. So, unity is the first thing that actually help us to maintain our name, identity, and our recognition in the world. So, we can say that this poem, The Cloths Line, tells us about the importance of sticking to our roots, to be in touch with our own traditions and cultures, like cloths that is attached with bags on a clothesline. And when a handkerchief sets itself free, it lost everything, its identity, its place, and nobody knows that where she is now. She is hidden in a ditch or drowned in the sea. Nobody knows about her. So, this is all about your poem, The Clothesline, with its deep and hidden meaning. Hope you have better understanding of the poem now. Thank you.